Restoration work is underway in full swing in Assam's Dima Hasao district, which was hit hard by heavy rains and landslides triggered by Cyclone Rimal. As per the latest inputs, the road communication between Umrangso and Lanka, Haflong and Silchar and Haflong to Guwahati has been restored for light vehicles. So big development there, viewers. Key road communications have been restored for light vehicles. The approach road to New Haflong station, however, still remains blocked. Due to landslide and restoration of the same will take some time, authorities have informed. The chairman, Dima Hasao District Disaster Management Authority, Simanto Kumar Das, informed that all line departments have been alerted for any consequences arising out of recent heavy rains and flood-like situation. इन दिनों बारिश के कारण बहुत सारे रोड अभी भी ब्लॉक पड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि सिलचर हाफलोंग का जो रोड है लाइट व्हीकल के लिए छोटे छोटे गाड़ी के लिए जो है उसको खोल दिया गया है रिस्टोर ऑलमोस्ट टेम्पोररी रिस्टोर हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि ठीक न्यू हाफलोंग स्टेशन जो हाफलोंग का एक ही हिल स्टेशन कहा जाता है जो है न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन तो ठीक मेरे पीछे आप देख रहा होगा कि बहुत सारे एक जो है जेसीबी काम कर रहा है लेकिन ये एक ही जेसीबी काम कर रहा है 3 दिन से यहाँ पे लगातार जो है रोड ब्लॉकेट है और ये जो रोड ब्लॉकेट होने का कारण वही है कि ऊपर से जो है मिट्टी आ जाने की वजह से यहाँ पे जो है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है मोर देन 200 मीटर का आसपास जो है लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे ठीक मेरे पीछे आप देख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ जो है ये रेलवे स्टेशन का जो बाहर में पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ है जो है ये इसमें मलबे जो पूरी तरह से आ गया है लेकिन जो भी है डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि लंका उमरांसो रोड अभी खुल गया है और 4 जगह पे जो है रिलीफ कैंप खोला गया है 1 माहौर और ड्यूंगब्रा में 3 खोला गया है उसके लिए यहाँ का जो जितना रिलीफ का सामान जरूरी है उस सभी चीजों को यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्यवस्था कर रहा है আমাৰ গোটেই জিলাখনত ফ্লাডত সৰ্বমুঠ 7খন গাঁও মানে ফ্লাড ৱাটাৰ মই কৈছোঁ 7খন গাঁও ষ্টৰ্মৰ দ্বাৰা 22খন গাঁও আৰু লেণ্ডশ্লাইড হৈ পেলাই 44খন গাঁও 44 নাম্বাৰছ অফ ভিলেজ এফেক্টেড হৈছে চ' এই গোটেইখিনি সামৰি পেলাই আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আমি মুঠতে 4টা ৰিলিফ কেম্প খুলিছোঁ এতিয়ালৈকে 4টা ৰিলিফ কেম্পত 172 জন মানুহক আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি শেল্টাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক অহা 3টা দিনৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ৰিলিফ মেটেৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে তেওঁলোকক আৰু প্ৰত্যেকটো ৰিলিফ কেম্পতে আমি মেডিকেল টিম অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছসকল PHE ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ এই সকলোৰ সৈতে যিমানখিনি হাইজিন আৰু মেইনটেইন কৰিব লাগে গোটেইখিনি আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য আমি ৰেগুলাৰ মনিটৰ কৰি আছোঁ থ্ৰু অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ আমি তেওঁলোকক কুক ফুড আৰু প্ৰেগনেণ্ট ওমেনবিলাকক কুক ফুড প্ৰভাইড কৰিছোঁ তো আমি আশা কৰিছোঁ যে পানীটো কমি গ'লে অহা 3 দিনমানৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোক ৰিলিফ কেম্পবিলাকৰ পৰা পঠাব পাৰিম ভাল কথা এইটোৱেই যে NHI যিকেইটা আমাৰ জাতিংগা টু হাৰাংগা যাওঁ ৰোড যাৰ কাৰণে আমি কাছাৰ লগত কণ্টেক্টটো বন্ধ কৰিবলগা হৈছিলে সেইটো আজি ৰেষ্ট'ৰ কৰা হৈছে চ' লাইট ভেহিকল মুভমেণ্ট আমি এলাউ কৰিছোঁ ৰেলৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা আমি ৰেলৱেৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰি আছোঁ ৰেলৰ যিটো পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন সেইটো ৰেষ্ট'ৰেশ্যন হওঁতে আমাক কিছু সময় লাগিব আমাৰ ৰিচেণ্ট যিটো তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাশ্যন হৈছে সেইমতে প্ৰায় 7 দিনমান সময় আমাক লাগিব কিন্তু পেছেঞ্জাৰ্ছ গাড়ী গুড ট্ৰেইনছবিলাক আমি পঠাবৰ কাৰণে আজি আমি এটা টেষ্ট ৰান কৰি চাম যদি আমি টেষ্ট ৰানত যদি আমি ছাকচেছফুল হওঁ হয়তো আমি গুড ট্ৰেইন খুব সোনকালে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চাম